मेजरमेंट पार्ट 3, इससे पहले हम बेटा बात कर चुके थे मेजरमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द मास इन डिटेल एंड लेंथ इन डिटेल, देयर बिगर यूनिट एंड देयर स्मॉलर यूनिट्स। तो आज हम तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, दैट इज योर टाइम। तो बेसिकली टाइम होता क्या है, जनरली हम टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आइंस्टाइन ने बहुत ही सिंपल वे में कहा है, व्हाट द क्लॉक रीड्स दैट इज योर टाइम, व्हाट द क्लॉक रीड्स। बट मैं अगर इसका थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इट इज द इफेक्टिव टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव इवेंट्स, दैट ड्यूरेशन इज वी डिनोट टाइम। तो बेटा इसके अगर हम बात करेंगे, टाइम के जो यूनिट होते हैं दैट इज योर जनरली सेकेंड, राइट। लेकिन अगर हम बात करें बिगर यूनिट की, जैसे हमने बात करी थी मास और लेंथ की भी, तो टाइम के भी बिगर यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर, दिस इज योर टोटल ट्रॉपिकल ईयर। व्हाट इज योर ट्रॉपिकल ईयर? देखिए देखिए बेटा, ट्रॉपिकल ईयर मीन्स, ट्रॉपिकल ईयर होता है आपका और ईयर इन विच total solar eclipse. So this year means a tropical year, that is also denote to measure the time, right? आपने देखा होगा महाभारत में जब जयद्रथ को जयद्रथ अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले मुझे जयद्रथ को खत्म करना है, तो लॉर्ड कृष्णा दे नो कि भाई बीच में क्या हाल होगा, आपका सोलर एक्लिप्स आएगा, ठीक है कि नहीं। तो कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया था और अर्जुन को समाधि लेने पड़नी थी, बट बीच में अंधेरा हो जाता है बेटा थोड़ी देर के लिए। कौरव सोचते हैं कि अब अर्जुन को समाधि लेना पड़ेगी और जयद्रथ को बाहर बुला लेते हैं, और इतने में एकदम से बादल या अंधेरा छंट जाता है और अर्जुन जयद्रथ को मार डालता है। तो बेसिकली एक एग्जांपल देने का ये मकसद था कि जो ट्रॉपिकल ईयर है, जो सोलर एक्लिप्स है, मून एक्लिप्स है आपके, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हैपन करते हैं, होते हैं आपके, तो इनको भी हम डिनोट कर सकते हैं टू मेजर द टाइम। दिस इज योर ट्रॉपिकल ईयर। सेकंड है आपके पास, दैट इज योर lunar month, total time taken by the moon to complete one revolution around the earth, and one lunar month is equals to your 27.3 days बेटा, ठीक है। ये भी एक यूनिट है टाइम को मेजर करने का। सेकेंड इज योर, दैट इज योर लीप ईयर। अब लीप ईयर होता क्या है जनरली अगर हम बोले, दैट इज a year which is divisible by 4 or February month has 29 days. Okay, that is your leap year. So students, leap year repeats after every 4th year, so we can also use this leap year to denote time. तो कई बार पूछा जाता है it is a unit of distance or time, so leap year is the unit of, you can say, time. अगर हम बात करते हैं next, that is your solar year. तो solar year means the total time taken by the earth to complete one revolution about the sun, and it is your 365 डेज। और लीप ईयर में हम जनरली लेते हैं बेटा 366 डेज, वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये तो थे आपके बिगर यूनिट। अब मैं बात करूंगा, दैट इज नेक्स्ट अनदर वन यूनिट्स, दैट इज मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है बेटा? दैट इज योर पीरियड ऑफ 1000 year. जैसे अमिताभ बच्चन was is known as the star of millennium, right? Century. Period of your 100 year, और हम बात करते हैं बेटा डिकेड।
decades, that is period of your 10 year, right? So these are the bigger units to use, measure the time. Now we shall discuss, the smaller unit of time, क्योंकि हमने characteristics of a unit में पढ़ा था कि unit must be of suitable size. So bigger अगर physical quantity है तो bigger units होंगे, अगर smaller physical quantity है तो smaller units होंगे. तो smaller unit आ जाएगा आपके पास, yes that is, तो स्मॉलर यूनिट क्या आएगा आपके पास, वन शेक. One shake is how much? That is 10 raised to power minus 8 second. One shake is your 10 raised to power minus 8 second. So this is, all about beta time, the bigger unit and smaller unit. Now we shall discuss, about the characteristics of SI unit. What are the characteristics of SI unit? SI unit is rationally accepted everywhere. So first is, it is a rational system of unit. Second is your, yes, it is a metric system. Metric system of unit means multiple of 10 raised to power. And third I would like to discuss with you, that is, it is a coherent system of unit. As a system is what, it is a coherent system of unit. Coherent system of unit means when the unit is, yes, obtained, when unit obtained by multiplying or dividing, the fundamental units, then it is said to be your coherent system of units. So we have discussed, about three characteristics. One, it is a rational system of unit. It is accepted rationally everywhere, means it remains same everywhere. Second, it is a metric system of unit, means it is always, in the multiple of 10 form. And it is a coherent system of unit, means unit obtained by multiplying or dividing, the fundamental units. Next बेटा, अब हम बात करेंगे, there are some indirect method. Indirect method to measure distance, long distance as well as small distance. How we can measure? Suppose if you want to measure the height of any tower, you want to measure the height of Mount Everest, yeah, any, where we cannot measure directly, then we use this indirect method. To first, we use, that is your, we call it as a radar. अब मैं इसकी फुल फॉर्म भी डिस्कस करूंगा. रेडार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार बेटा? ठीक है, आपने सुना होगा आजकल देयर इज अ वेरी, environment is very tense, in India and Pakistan and China. So radar के बारे में आपने बार बार सुना होगा बेटा. तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. अब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये वर्कआउट कैसे करता है बेटा? देखिए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, हमने यहाँ से एक बुलेट फायर किया पॉइंट O से, and this bullet will hit, this object. This is reflection method ही कह सकते हैं. This radar, sonar, they will work on reflection method, right? This reflection method, और इसको हम कहेंगे इको मेथड भी कहते हैं बेटा. तो देखिए, कोई भी है आपका साउंड ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी v, then it travel a distance s in time t, okay, small, then again, it strike here any obstacle, then the sound will travel, we listen that sound. So total distance to travel करता है sound, that is equal to 2s, and distance क्या होता है बेटा? velocity into your time. So we can find s equal to v into t by 2. So ये जो radar है बेटा, ये क्या करता है? एक
यूवी आपका एक सिग्नल सेंड करेगा। जो भी आपका टेरिटरी है हमारा, अगर उसमें कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट प्लेन अगर एंटर करता है, जेट एंटर करता है, तो वो उससे स्ट्राइक करेगा एंड देन रिफ्लेक्ट बैक। तो हम इवन जो रेडार है आज की डेट में, दे आर सो एडवांस्ड, इवन दे आर नॉट इवन find that at what distance the object is, but they can find the angle and hit the target. Okay, सेकंड हम बात करेंगे बेटा, दैट इज योर सोनार। ये सोनार होता क्या है जनरली? यस, दैट इज योर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपने बेटा देखा होगा, टाइटैनिक मूवी तो सबने देखी होगी। बेसिकली उस टाइम में इट इज बिलीव्ड दैट टाइटैनिक was the unbreakable ship in the world. So there was 3000 people, I think, they are traveling in Titanic. अब होता क्या है, when it is very near to the iceberg, तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम में आपका सोनार डेवलप नहीं था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम डेवलप नहीं था। हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी अगर एक सिग्नल सेंड कर दिया हमने सरफेस से, राइट, देयर आर सो मेनी आइसबर्ग एंड ऑब्स्टेकल्स अंडर द सी वाटर। तो जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल से वो सिग्नल स्ट्राइक करेगा बेटा, देन इट रिफ्लेक्ट बैक, और जो कैप्टन होता है शिप का, दैट कैन मेजर द डिस्टेंस एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ शिप। बट जो टाइटेनिक था उस केस में, इट्स अ वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, यू कैन से बहुत बड़ा टाइटेनिक, बहुत बड़ा जहाज था। तो जैसे ही उनको दे रियलाइज कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आइसबर्ग इन फ्रंट ऑफ इट, दे ट्राई टू चेंज इट बट इट्स इन वेन। बहुत नज़दीक था उसके, तो वो स्ट्राइक कर गया, और जब वो हिट हुआ, ब्रेक हुआ, तो वो ब्रेक सेंटर से हुआ, वेयर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। एक और छोटा सा मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो देखिए, सोनार को भी हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द डिस्टेंस, एंड इट वर्क्स ऑन द इको एंड द रिफ्लेक्शन मेथड बेटा। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर लेजर। हम लेजर को भी यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द हेवनली ऑब्जेक्ट सन एंड स्टार्स। रीजन बीइंग दैट ये जो लेजर है बेटा, ये लाइट, लेजर लाइट दैट इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अर्थ टू द सरफेस ऑफ मून विदाउट एनी स्कैटरिंग, विदाउट एनी deviations, right? So we can measure distance very correctly, with this. So what does it mean? It also works on your reflection method, eco method. Okay, तो ये laser होता क्या है basically? Yes, full form of this, light amplification by stimulated emission of radiations. Light amplification by stimulated emission of radiation. So this is about your laser. तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका ट्रायंगुलर मेथड है, पैरालेक्स मेथड है, और हाउ वी मेजर द डायमीटर ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। सो टिल बेटा आपने ये जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है, ये यहीं हम इसको स्टॉप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो न्यू वीडियोस हैं, जो नए अपडेट्स हैं, आपको मिलते जाएं। और कोई कमेंट एंड सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।